ड्यू टू इट्स ट्रॉमेटिक रिमूवल और डैश डेथ। बताओ बताओ, एटलीस्ट जो पढ़ा रहा है वो घर जाके थोड़ा सा रिवाइज करो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। आए मॉलिक्यूलर डेथ, यस, याद आ रहा है कि नहीं? याद नहीं आ रहा है? याद आ रहा है? अच्छा तुम ही बता दो, तुम बताओ डेफिनेशन बताओ। नहीं बताओ डेफिनेशन बताओ, अल्सर का डेफिनेशन। लास्ट वीक तो थे तुम क्लास में, राइट? ठीक है चलो रिवाइज हो जाएगा सबका। बोलो ना, स्टार्ट करो ना, कोई इसमें कुछ वो नहीं है, डिस्कशन के हिसाब से। बेसिक डेफिनेशन बोलो, व्हाट इज अल्सर? ऐसे यार, you will not be able to tell this in front of the examiner, right? The breach or break, right? Due to, abhi I just said, due to breach or break in the continuation of the epithelium or the lining membrane due to traumatic removal or molecular death of the tissue. ठीक है, this is the basic definition. और कोई पढ़ के नहीं आए हो, because I thought I'll ask you the types of ulcer, थोड़ा रिविजन के हिसाब से, but I'm assuming किसी ने नहीं पढ़ के आया है। Nobody studied, right? वो उतने पीछे क्यों बैठे हैं वहां पे? Come in front ना, मतलब this is a discussion. There is not going to be any examination. This is just a discussion. Come in front, guys. बाकी, do you guys have attendance? Does anyone take attendance for you guys? लेते हैं? मतलब I am not saying कि attendance दो या नहीं दो, but it is a discussion, so it is for your help, not for कोई attendance भी नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ है होता है, हम तो देखा नहीं है कभी। हाँ लास्ट क्लास के लास्ट में होता है जाके। हाँ क्लास के लास्ट में। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कोई anyone types of ulcer? Types of ulcer? हाँ तुम तो you were answering last time, फिर why are you telling like this? हाँ हाँ prepare well का क्या है? if you are putting focus in a class, this is basic. हाँ ठीक है चलो। Based on edges, edge, everyone remembers what an edge is? Ulcer का edge, edge के basis पे बोल दो 3 types of ulcer. ओके ठीक है ठीक है। अगेन बेसिक हीलिंग याद है? हीलिंग अल्सर देखो, किसी को बात करना है तो अटेंडेंस देके जा सकते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम। आई एम डूइंग दिस फॉर योर हेल्प। मेरे को कोई देयर इज नो बेनिफिट फ्रॉम, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी एट ऑल। नहीं, जस्ट टाइप अल्सर। हीलिंग अल्सर वाज वन, एनीबॉडी एल्स? नहीं, एक व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, फॉलो दैट, तो वन विल बी हीलिंग। Apart from that, non-healing. Okay, then, and non-healing or chronic same. And third is spreading or inflammatory. 3 types, right? ठीक है। Apart from this classification, any other classification anyone knows? Okay, trophic is one sub-classification. Super classification will be what? Based on cause. Cause में क्या था? Specific and non-specific, right? ठीक है, जाके पढ़ो guys, है ना? इट विल गोइंग टू हेल्प यू गाइस ओनली, मतलब इजी कर देगा तुम लोग के लिए पढ़ना, एंड बाद में एग्जाम में भी हेल्प होगा। ठीक है ठीक है। ब्रेस्ट क्या पढ़ के आए हो? फिर ब्रेस्ट पढ़े हो कुछ भी? हाँ पढ़े हो ब्रेस्ट? सब कोई थोड़ा रफली पढ़ के आए हो सब कोई? ठीक है चलो, लेट्स स्टार्ट विथ हिस्ट्री देन, विद द होप कि नेक्स्ट वीक यू विल बी एबल टू आंसर, राइट? प्लीज पे attention, this is going to help you guys. Next week I'll be asking again, only to face the same scenario again next week, right? कि नहीं? No, ठीक है। तो let's start from history. Very basic. History में क्या पूछोगे? Because this is in breast, history is important, so only I'm saying कि history start करते हैं। अल्सर में थोड़ा important था, but short case है, उतना ज्यादा emphasis नहीं रहेगा। Breast में there will be enough emphasis on history also. So let's start with history. क्या होगा? बोलो, start करो। Onset. ब्रेस्ट में डायरेक्टली स्वेलिंग में आओगे? ठीक है ओके, यस चलो ओके ठीक है, लंप में आओ।
हाँ, lump में yes, lump में start करो. Someone tell me. Inspection again. Let's see. Keep it basic. Basic से रखो. History में do not utter inspection, palpation. History में नहीं utter करना ये सब. Examiner will think ठीक है चलो. History में आए. History में lump में आए. Lump में क्या देखोगे बोलो? Onset of the swelling. Again, there are these are individual complaints. Once you're in the lump, onset was right. Then उसके बाद onset. Okay, ठीक है हाँ. Okay. Rate of growth. Now let's come to rate of growth. Why is rate of growth important? Anyone? हाँ. Rate of growth. Rate of growth में if it is a rapidly growing, what will you assume? If the patient is saying, sir, my swelling was pea-sized, but right now it has become cricket ball-sized in the matter of 6 months. मतलब that is rapid growth, right? उसका क्या मतलब होगा rapid growth? Malignancy, right? Okay. But there is an exception to this. Slow growing, you will think, assume it is benign, right? But this is an exam question. They will ask you, what is the exception to a slow growing malignant tumor? If you've read Das, you will be able to answer. Fibroadenoma is malignancy. हाँ. अरे यार, अभी rate of growth को लेके discussion हो रहा है, right? हाँ. Slow growing malignant tumor, atrophic serous carcinoma. Atrophic serous carcinoma will be slow growing malignant tumor. If they ask you क्या है, you will say atrophic serous carcinoma. चलो ठीक है. Okay, lump. Lump का basics हुआ. ठीक है. Rate of growth हुआ, duration. Duration you have to ask and mode of onset, right? Now, any lump के साथ में you can always ask any history of trauma, right? Why? वो तो ठीक है, I understood. मतलब that is very basic, right? कि why I am asking, what will happen secondary to trauma? Anyone? Hematoma, okay, yes. Apart from that, yes, वो तो yes. Hematoma was right. उसके अलावा breast consists of what? Fat, right? Okay, fat. So if you give trauma to a fat, what will happen? हाँ? ठीक बोल रहे हो, बोलो. Necrosis, right? So fat necrosis. So a fat necrosis can also mimic a lump. Hence, history of trauma is important. ठीक है, okay. Apart from this, उसके अलावा और क्या complain कर सकता है patient? ठीक है, ओके. रिलेशन टू साइकिल्स, ठीक है. व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट? किसमें दिखता है? फाइब्रोएडेनोसिस, ठीक है. और दिस विल बी मोर इंपॉर्टेंट इन वन कंप्लेन. व्हाट इज दैट? और क्या कंप्लेन करेगा पेशेंट? पेन, यस. देन पेन में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा साइक्लिकल में? व्हाट इज ब्रेस्ट पेन कॉल्ड एज? मैस्टैल्जिया. सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज साइक्लिकल मैस्टैल्जिया. दैट इज व्हाई टेकिंग हिस्ट्री ऑफ साइकिल इज इंपॉर्टेंट. तो फिर देन मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री यू हैव टू टेक द होल थिंग एज इज, लाइक number of days and all, वो सब important होता है. I'm sure you know about all those things, right? So you take that. Okay, that is pain. फिर benign conditions are painful or painless? Painless. Painful. Painless. One exception of a benign, relatively benign condition but is painful. Breast abscess, yes. Okay. Apart from that, phi नहीं, phi is right. उसके बाद Phylloids. Anyone heard of phylloids? That can also be painful because of stretch of the capsule. चलो ठीक है. Okay, pain हुआ. उसके अलावा next complaint, discharge. Okay, discharge from breast. Now, अब अगर कोई, if anybody is read, then tell me if the patient is presenting with discharge. There are two types of discharges. Basic discharge. You only tell me from basic understanding. Breast से discharge, where all can it happen? Two places it can happen. Tell me. Nipple discharge, secondly, or from surface, nipple or from the breast, right? Okay. Now tell me breast surface से कब देख सकते हो? चलो ठीक है, that is a little. Nipple discharge करते हैं. Nipple discharge can be cause of a lot of reasons, malignant or benign, right? Give me some conditions of benign nipple discharge. Anyone? Galactocele, okay. Galactocele में what will you see in galactocele? What color of discharge? Basic. White color of discharge, okay. Milk discharge.
IDC is again तुम्हारा उसमें cancerous में. I'm asking for benign nipple discharge, benign conditions. Apart from that, something that is most common. Mastitis will show nipple discharge. If अगर कोई पढ़ा है, they will be able to answer. कोई तो nobody's opened the ass over here. Duct ectasia, very good. Duct ectasia is what they are going to ask. इसमें what is the color of discharge? हाँ, green serous, and in some cases you can also find blood mixed. Now, why is blood mixed important? Blood mixed again, most common cause is duct ectasia, but it is seen in carcinomas also. Now, carcinomas में intrarectal carcinoma is important. That will show nipple discharge. Okay. Apart from that, complaints. Next. Discharge apart from that. और क्या दिखता है? Basic retraction of nipple. क्या book देख के बोल रहे हो? Retraction of nipple, ठीक है. Why is retraction of nipple important? अरे, pute orange again next time. Next complaint. Why? Okay. Carcinoma. Okay. That is fine. You're telling me a DD. Okay, but tell me why is it important? And what is important in retraction of nipple? No, the patient is telling you I have retraction from 1 year of age. Since I was a child, I have seen retraction of nipple. Is that important? Or a patient coming and telling you I have retraction for the last 6 months? Which is more important? 6 months. Why? So you know everything, but you're not able to answer, right? Huh? The recent onset nipple retraction is important. Why? Because it will show presence of malignancy, right? Long onset can be again congenital cause also. So recent onset nipple retraction, that is important. Okay. Yes, that is the cause of nipple retraction. Yes, that is a part of theory. But okay, yes. Okay. Apart from that, okay. उसके बाद let's come to loss of weight. Why is loss of weight important? Malignancy. ठीक है. ठीक है. If patient gives history of fever. अरे okay, infection, inflammation तो yes, fever में you will say, but give me specific cause. You are in the class of breast, right? Tell me what will you see? Fever in. Somebody told also. Mastitis, okay, ठीक है. अरे नहीं, breast abscess. Someone told me ना breast abscess. उसमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा? These are basics. Understand this. Basic concepts. ठीक है. Loss of weight is important in case of what? Malignancy, right? Malignancy. What is significant loss of weight? Basic third year में पढ़े हो ये तुम लोग. What is significant loss of weight? No. There is a particular percentage. Okay, 5% in, 10% in. Again, if you are saying 5%, 5% is also right. But 10% give 10% answer, because 5% will come to more than equal to 5% in 1 month or 3 months, and 10% in 6 months. That is a definition. More than equal to 10% in 6 months of duration. That is significant loss of weight. Loss of weight तो हमारे भी हो सकता है ना, after exercise and all, but that is not significant, right? That is not relevant. ठीक है. Apart from that, past history. Why is it important? Yes, okay. Surgery, previous surgery also, mastectomy, they can show recurrence or recurrence in the opposite breast. Both are important. Okay, past history is important. Now, personal history. This is very important in breast. Smoking, okay, one. Apart. Parity, why parity? Increased chances, okay. Give me the specifics of nulliparity. What is the said age you are looking at? 35. More than 35, risk of breast cancer increases in nulliparity. And age at first childbirth. Same thing, nulliparity and age at first childbirth. Okay, that is important. Okay. Smoking is also a risk factor. Okay. Personal history में nulliparity, marriage and तुम्हारा family history. Okay, what? Yes, family history is also very important. Why? BRCA. Yes. Okay. Now I am asking you, how many mutations are there in BRCA? What types of BRCAs are there? 2. Okay. Which is more aggressive?
BRCA1 is more aggressive. Okay, apart from this, what other genes have you known with breast cancers? P53, good. Or apart from HER2/neu is a gene expression. HER2/neu, yes, okay, HER2/neu, okay. Apart from that, genetic conditions, STK11 and all these things you'll read in theories. Okay, fine, okay, okay. Apart from this, anyone can think of any other complaints? What? Turner syndrome. Okay, Turner syndrome. Yes. Yes. Okay. ठीक है. Now let's. Yes. Why gynecomastia? Males. Okay. Males. Then what happens? Why is gynecomastia important? No, I am concerned with breast. I am not asking about the patient's general well-being or anything. If a male patient presents with you with a breast tissue, why is that important? What will you do in gynecomastia? Okay, hormone level, you've understood everything. You come to a diagnosis that this is breast tissue. FNAC kara liye, you see that this is breast. After that, what else? What are you going to do? Mastectomy. Why? Mastectomy. Mastectomy, not surgery. Mastectomy, because you are removing breast tissue, right? Why do you want to do mastectomy? Breast tissue छोटू सा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. Why do you want to remove it? Spread. Breast tissue spreads. But insignificant. दिख रहा नहीं है कुछ भी, मतलब cosmetically there is no indication. I am telling you, the patient does not have any cosmetic indication to remove. Why will you remove? Any guess? Easy guess. Breast cancer. Why breast cancer? It has very high chances. In male breast, there is a high chance of breast carcinoma. So only we go for a mastectomy in male breast. ठीक है. Okay. Now next, let's come to inspection then. ठीक है. चलो. Start. Someone start. पढ़ के आओ यार, मतलब it will be good for you guys also. आधा पढ़ाई इधर ही हो जाएगा तुम लोग का. ठीक है. Inspection. नहीं, this usually मेरे को वो करो, define करो. What in shape? Symmetry of both breasts. Why? Why do you see symmetry? मतलब why do you think it is important to see symmetry? Fibrosis, okay, ठीक है, हो सकता है in case of atrophic serous and all these things, हो सकता है, ठीक है. But the common reason, if there is a big lump in the breast, then the size में disparity होगा कि नहीं होगा? Right? Simple. So you have to see if one breast is small or one breast is large, like that. Okay, size, shape, हाँ. Nipple symmetry, okay, ठीक है. Okay, firstly, most important, before starting inspection, you have to tell, I inspect in 4 positions. That is most important in breast. 4 positions. Somebody tell me, you tell me. 4 positions of breast inspection. So, inspection in 4 positions. अरे पहले तो आर्म सीधा ऊपर ले जाओगे कि साइड रखोगे? आर्म्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी. ओके, ऑन द वेस्ट, ठीक है. रेज्ड अबव द हेड एंड 4th पोजीशन बेंडिंग फॉरवर्ड. ठीक है, चलो ठीक है. सो दिस इज द 4 बेसिक पोजीशंस फॉर इंस्पेक्शन. अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ साइज शेप हुआ, ठीक है. साइज शेप, स्किन ओवर द ब्रेस्ट, निपल रिट्रैक्शन, ठीक है. ठीक है, one by one. चलो, पहले तो हो गया लंप को डिफाइन करो. इफ यू कैन सी द लंप, ठीक है. अरे फिक्सिटी इज इंस्पेक्शन, और कैसे इंस्पेक्शन में कैसे देखोगे? देख सकते हो इंस्पेक्शन में फिक्सिटी, बट फिक्सिटी टू चेस्ट वॉल, बेंडिंग फॉरवर्ड इट विल नॉट गो अहेड. चलो ठीक है, ओके, लेट्स कम बैक. अपार्ट फ्रॉम दैट, लंप को you've defined. If you can see a visible lump, then size, shape, margin. Why is margin important in breast? Huh? Defined margin you will be seeing in fibroadenoma. You will see a defined margin, or you will see defined in breast carcinoma. Benign lesion, defined margin. Sure, this is not a swelling in the hand. Defined margin, always assume that it is a carcinoma, because breast, apart from that, have you ever seen a fibroadenoma? Fibroadenoma, sorry, you've seen, it has a defined margin, on inspection, you've seen a defined margin for it never is defined on inspection.
When you feel it, you will be able to feel a defined margin. Yes, that is on palpation. Palpation में मिलेगा तुम्हारे को defined margin. On inspection, you will not see a defined margin. If you get a defined margin, if the examiner asks you, say it is more commonly a breast carcinoma. Defined margin is commonly in breast carcinoma. But उसके अलावा देख, obviously your patient is in front of you. You have to answer accordingly. ठीक है. Then let's come to nipple. What all will you see in nipple? Retraction. Okay. Any obvious discharge? Huh? Cracks. Okay. Crack is seen in what conditions? Sore. Okay. Cracks. हाँ ठीक है. Lactating ठीक है. Apart from that, वो तो हुआ है. Okay. Apart from that, अरे cracks you can see in carcinoma. I am looking for a third answer here. Crack on the surface of the nipple. Eczema. Okay, don't confuse yourself. ठीक है, चलो, ठीक है. Next. Apart from that, level of both nipples. That is important on inspection. Because if there is any tumor behind the nipple, it can raise or make it downwards. So only. ठीक है. Nipple and areola, you have to see. Areola has a specific gland. Can anyone name the gland? It is enlarged in pregnancy. Montgomery's gland. चलो ठीक है, ठीक है. Apart from that, your exam inspection is done क्या? Everyone? जो पढ़ के आए वो तो एटलीस्ट बोलो इंस्पेक्शन हो गया? हो गया? तब फिर? हाँ? तो कर लिए इंस्पेक्ट. ब्रेस्ट एंड निपल इंस्पेक्शन के बाद हो गया क्या इंस्पेक्शन डन? ठीक है. ओके. सरफेस ऑफ द ब्रेस्ट ठीक है. Any engorged veins? Engorged veins are seen in what conditions? Give me one benign, one malignant condition. Malignant चलो कार्सिनोमा. benign थोड़ा पढ़ के आओ यार. फाइब्रॉइड में मिलेगा. ओके. seen in अभी I just said थोड़ी देर पहले benign condition that is painful. Duct ectasia. Breast abscess नहीं. Other thing that I said painful. Phylloids tumor. You will have engorged veins. ठीक है. Apart from that, inspection is over. We'll go to palpation. Yes, axilla you have to see. ठीक है. Axilla में any obvious swellings. Look for any visible lymph nodes. That is why axilla is important. Apart from that, we'll go to palpation. Scars for previous surgery for what? Mastectomy. Previous mastectomy. वो देखोगे ना ब्रेस्ट में. If any. ठीक है. Done. We'll go to palpation. Sure. Arms नहीं देखना. Arms, thorax नहीं देखना. Why do you see arms? चलो, you didn't answer, but at least tell me why do you see arms? Arms. Lymph node is in axilla. That is done. Edema in the arms. Okay. Why? You're right. Why? You're right. You're right. Lymphatic drainage. What will happen? Lymphatic drainage will get obstructed because of. It will get obstructed because of what? Arey, carcinoma, right? It will get obstructed because of carcinoma, and that will give rise to brawny edema in the arms. That is what you have to see. Arms, you have to tell. Apart from that, you will also see thorax. Has anyone heard of cancer en cuirass? No. There is coat-like armor in the thorax. That happens because of blockage of subdermal lymphatics. Coat-like armor जैसा appearance होता है. ठीक है. So तुम्हारा ये हुआ inspection. Arms हो गए, axilla. चलो. ठीक है. Apart from this, the last inspection will be you raise arms above the head. Why do you do it? Okay, where is the swelling to make it more prominent to raise hands up? If it is in the lower margin of the breast, now because sometimes if there is a heavy tissue, you are not able to inspect the lower aspect. So if you raise the arms, okay. Apart from this, if there is any skin fixity, and if you raise the arms, what will happen? There is a sign that you will see in the skin if you raise the arms. That will become more prominent. Dimpling or puckering will become more prominent if you raise the arms.
That on inspection. Chalo theek. Let's come to palpation. Same thing. Palpation mein. Tell. Basics. We've gone through the swellings. उसके पहले temperature and tenderness. Basic. This should be always in your fingertips. Temperature, tenderness, height, size, shape, surface, consistency, fluctuation. Fluctuation. Where will you see fluctuation in a breast lump? I am asking about consistency. We'll come to fixity later. Consistency. Sorry, this fluctuation. Yes. Really fluctuant. It will be mobile. It will not be fluctuant. Right? Fluctuation means what? Fluid, right? Fluid किसमें मिलेगा तुम्हारे को? Cyst में. उसके अलावा apart from that, abscess में. Right? Basic. मतलब understand the basics. Answering will be very easy then. Fluid मिला तो तुम्हारे fluctuant होगा उसमें. Cyst में होगा या abscess में होगा. ठीक है? Okay. Apart from that, उसके अलावा बोलो. हाँ, next palpation में बोलो. Come to palpation. Skin. Let's individually. Skin. बोलो. Skin में क्या कैसे देखोगे fixity? 3 signs. 3 ways to elicit skin fixity. बोलो. Palpation. I'm asking palpation. No longer in inspection. ठीक है? Okay. नहीं. If you move it and you see dimpling or retraction because you are looking for skin fixity, right? If there is no dimpling, if अगर skin से चिपका हुआ है, तो when you do this, this surface will become more. It will show dimpling or puckering. So that is what you are looking for. One, that is that one. Then apart from that, how will you check that? Pinch. And there is a third one. Something very basic. If अगर ये चिपका हुआ है skin से, if you do this, will the skin move? So you move your hand above the tumor and see the skin is moving or not. These 3 signs. It appears. So these 3 tests you have to do to understand whether it is fixed to the skin or not. Okay. Now next, fixity to breast tissue or not. How will you do that? Yes. You have to hold the breast with one hand and move the tumor with the other hand to see if the breast tissues are moving along with the tumor or not. That is how you demonstrate fixity to the breast tissue on. Okay. ये हुआ. उसके अलावा next, fixity to fascia or muscle. Okay. How will you do that? Okay. First tell me what are the direction of pectoralis major. Show me like this. How is it? ऐसे है, कैसे है? ऐसे है, right? So why am I saying this? Why is this important? Swellings, if at all you've read swellings properly, you will understand. When I say fixity to a muscle, what is important? Direction of the fibers of the muscle, right? ठीक है. This is the direction. So before checking fixity, you have to first move the tumor and see whether it is moving without tauting the muscle or not. If it is moving, okay, fine. Now you taught the muscle. How do you do it? Ask the patient to keep the hands on her hip and press and relax as and when you tell. Okay. Patient is now pressing it, making the pectoralis major taut. Then will the lump move or not? It will not move if it is fixed to the fascia or the muscle. This is how you understand fixity to muscle. Okay. Apart from that, fixity to chest wall. How will you? Bending forward. What will happen? In case of a tumor is not fixed to the chest wall, what will happen? Fall uniformly as the other breast. But if it is fixed to the chest wall, it will not fall. Okay, fine. This is fixity to chest wall. Okay. Apart from that, okay. Palpation. Now, second important point for palpation is what? Most important. Otherwise, fail. You've palpated the breast. You've palpated the nipple to look underneath if there is any kind of lump or mass. Axilla. Okay. Now tell me the 5 groups of axillary lymph nodes. That is one classification, this is another. You can't mix. Either you define anterior, posterior,
lateral, central, apical, or you say subscapular, pectoral, like that. Yes. Abhi for the time being, no anterior, posterior, and then you read theory and understand all those nomenclatures. ठीक है. 5 types. Does anyone know examination of axilla? You know? चलो दिखाओ, इस पे करके दिखाओ. ये बोला इसको आता है, तुम ठीक है करके दिखाओ ना. Everybody will learn also because this is very important. Axillary examination will be asked you. अरे तू करके दिखाओ ना. तो डिस्कशन चल रहा है, मैं तो डिस्कशन कर रहा हूं. देयर इज नो थ्योरी क्लास, नथिंग. डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, सो दैट एवरीबॉडी कैन लर्न. हाँ, अरे उठ के दिखाओ ना. तुम्हारी तो फ्रेंड्स हैं, दिखा ना. क्या है इसमें? ठीक है. अरे क्या है इसमें? ओके, इसमें क्या देखे हो? एंटीरियरली, एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड को फील करो. ठीक है. ओके, यस. एपिकल. ओके. सेंट्रल ऐसे नहीं होता है. सेंट्रल में व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू आस्क द पेशेंट. वो अपना हाथ को तुम्हारे आर्म्स के ऊपर रखेगा, राइट? उसके बाद विथ योर अदर हैंड यू हैव टू प्रेस अपॉन द शोल्डर. यस, प्रेस, एंड देन यू पैल्पेट अ लिटिल डीप. दैट इज सेंट्रल. चलो. एंड हाउ विल यू एग्जामिन द लैटरल ग्रुप? लैटरल ग्रुप पीछे से कि पोस्टीरियर ग्रुप पीछे से? ठीक है, पीछे से भी कर सकते हो, सामने से भी कर सकते हो. तुम्हारे को एक हाथ को फिक्स करना है एंड विद द ऑपोजिट हैंड यू हैव टू चेक लैटरली. ठीक है. एंड फॉर द पोस्टीरियर ग्रुप पीछे से करना होगा पेशेंट के. सेम हैंड से करते हो. ठीक है. चलो नेक्स्ट. ये हो गया पैल्पेशन ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स. ठीक है. इंस्पेक्शन, पैल्पेशन. ब्रेस्ट में यही 2 चीज इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू अ लिटिल बिट ऑफ थ्योरी ऑफ द ब्रेस्ट. ठीक है. बिनाइन एंड मैलिग्नेंट कंडीशन. नाउ टेल मी, ब्रेस्ट में ट्रिपल असेसमेंट. हैज एनीवन रेड अबाउट ट्रिपल असेसमेंट? व्हाट इज इट? ओके. रेडियोथेरेपी की रेडियोलॉजिकल? रेडियोलॉजी, क्लिनिकल, रेडियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल. पैथोलॉजिकल में हिस्टोपैथोलॉजिकल आता है. चलो ठीक है. Now we've covered a little bit of clinical part, right? Now let's come to pathological. What can you do for pathology? Okay, दो चीज कर सकते हैं, FNAC and biopsy. Now tell me why FNAC and why not biopsy? And why biopsy, why not FNAC? Tissue sample मिलता है. Easy to in situ and all. Okay, that is one. Apart from that, ठीक है. Why do you do FNAC and why do you do biopsy? I'm asking for 2. Okay, let's start with why do you do FNAC? Why? FNAC is always less invasive. FNAC का एक गन आता है. You point the gun towards the lump and you insert the gun into the lump and shoot the gun. It'll take out the tissue of the lump and you give it for sampling. That is why FNAC is easy to do and like that is the first choice. What are the disadvantages of FNAC? Tell me. And why do you do for biopsy? In situ को नहीं define कर सकते हो FNAC में. Okay, in situ नहीं करते हो. That is one. You cannot differentiate in situ with invasive in case of FNAC. Second, why do you do for biopsy? Go for biopsy. Okay, but what of it? तुम्हारे को I give you 100 ml of tissue, तुम क्या करोगे उसमें? That is why you do biopsy, right? That is basic understanding. But why do you want to go for biopsy? अरे okay, what in malignancy? चलो ठीक है, I'll tell you. Staging, okay, it's a very मतलब what in staging? You're right, but what in staging? What do you look for? ERPR status, anybody is heard? वो FNAC में मिल जाएगा? वो FNAC में नहीं मिलेगा. You can only see that in biopsy. That is why biopsy is important. That is why you have to go for biopsy. Okay. Biopsy हुआ and FNAC. Basics I am making you cover, but read theory at home. Next week I will be asking questions again. You guys come up with एकदम blank answers. चलो ठीक है. So this is about pathological. FNAC versus true cut. This is an important question. Even in theory also this question can be asked. Right? There are 5-6 points ऐसे. एक तो ERPR status है, एक Ki67 index है. What is Ki67? Anyone? Proliferative marker. What will you
डू विद दैट? क्या करोगे प्रोलिफरेटर मार्कर से? हाई प्रोलिफरेशन इंडेक्स विल मीन व्हाट? Malignancy may be, it is a rapidly growing malignancy. मतलब it is a more aggressive tumor versus a lesser aggressive tumor, right? Yes. Now pathological में एक और बोलो. There is a pathological classification, right? क्या है बोलो? हाँ हाँ. TNM आएंगे, आस्ते आस्ते आएंगे TNM. Yes, one is that pathological subtype. IDC हो गया, lobular, ductal. लोबुलर एंड डक्टल हो गया, ये दो सुपर टाइप्स है. उसके बाद इसमें और भी टाइपिंग है. यू रीड दिस फॉर थ्योरी. ठीक है, चलो ठीक है. उसके अलावा देयर इज आल्सो अगेन अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लुमिनल, लुमिनल ए, लुमिनल बी. उस बेसिस पे तुम्हारा ट्रीटमेंट भी डिफाइन होता है. ठीक है. नाउ रेडियोलॉजिकल. रेडियोलॉजिकल में क्या क्या होता है? यूएसजी एंड मैमोग्राम. ठीक है. व्हाई यूएसजी एंड व्हाई नॉट मैमोग्राफी? एज बोलो. 40 नहीं 35 है. कट ऑफ 35 है अभी शॉर्ट्स में. व्हाट आई रेड लास्ट. व्हाट इज, तो लेस देन 35 में क्या करोगे? लेस देन 35 में यूएसजी करोगे. व्हाई? यंगर में क्या होगा? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? ओके. फॉर हेवी ब्रेस्ट मैमोग्राफी इज गुड बिकॉज यू हैव इनफ टिश्यू एंड इवन अ स्मॉलर, तुम्हारा कैल्सिफिकेशन कैन बी कॉट इन मैमोग्राफी. Hence less than 35 में मैमोग्राफी यूज होता है. Why more than 35 में मैमोग्राफी and not USG करते हैं हम लोग? And why not मैमोग्राफी? कम हो जाता है. breast tissue reduces, USG becomes more sensitive. Less than 35. मैमोग्राफी is more than 35. एक बार तुम भी पढ़ के आना एक बार. I will also reread and देख लेंगे क्या होता है. जितना मेरे को बेसिक conceptual understanding है, because less than 35 टिश्यू ज्यादा रहते हैं, मैमोग्राफी इज बेटर. बट स्टिल अगेन आई माइट बी रॉन्ग. एक बार पढ़ के आ जाना. ठीक है. हाँ ठीक है, एक बार पढ़ लेना. तुम लोग भी पढ़ लेना उसी बहाने. कम टेल मी नेक्स्ट टाइम. चलो ठीक है. ओके. नाउ यूएसजी एंड मैमोग्राफी हुआ. ठीक है. ओके. व्हेन इज एमआरआई डन? एमआरआई भी होता है. व्हेन इज इट डन? हाँ, हाई रिस्क इन वेरी गुड हाई रिस्क पेशेंट्स में. BRCA1 patients presenting with family history of breast carcinoma and genetic diagnosis हो गया है BRCA1, you need to go for MRI. चलो ठीक है. Apart from that, मतलब ये काफी एडवांस क्वेश्चन है, ये नहीं आने वाला है. इन स्कार रेकरेंस में तुम्हारा यू गो फॉर एन MRI. चलो ठीक है. तो दिस इज ट्रिपल असेसमेंट का वेरी बेसिक्स. रीड इन डेप्थ अबाउट द थ्योरी एंड कम नेक्स्ट. चलो ठीक है. लेट्स कम टू स्टेजिंग लिटिल बिट. ठीक है. स्टेजिंग एंड ट्रीटमेंट को थोड़ा सा आई विल टच ओवर. एंड बाकी थ्योरी तो ऑब्वियसली यू गाइस हैव टू रीड. एंड ब्रेस्ट कैंसर पे थ्योरी क्लास भी होगा, तब और अच्छे से होगा ट्रीटमेंट. चलो ठीक है. स्टेजिंग किसी को भी पता है? ओके चलो ठीक है. TNM. व्हाट इज T ऑफ TNM? ट्यूमर साइज. N नोडल स्टेटस. जस्ट अंडरस्टैंड दिस. बोलो ये अच्छा होगा. नोडल स्टेटस. एंड M मेटास्टेसिस. ठीक है. एनीवन नोज T स्टेजिंग ऑफ ब्रेस्ट? अरे वो T1 T2 तो पता ही है. T1 T2 में T1 लेट्स स्टार्ट विद T1. T1 is 0 to 2 इजी. ठीक है. T2 is 2 to 5. T3 is more than 5. T4 नहीं आएगा. T4 में तीन क्लासिफिकेशन, तीन टाइप होता है. T4A, B and C and D. ठीक है. A यानी A, T4A is fixity to chest wall. Fixity to chest wall, but not only pectoralis major, also to the chest wall, मतलब the ribs and all. चलो ठीक है. T4B, skin, pude orange and satellite nodules. Skin में क्या क्या हो सकता है? Ulceration हो सकता है and satellite nodules हो सकता है. ठीक है. T4C, A plus B. ठीक है. D plus B plus C is what again? A plus B plus A plus B. Inflammatory breast carcinoma. What is inflammatory breast carcinoma? That shows rapid growth, 50% or more growth within the next 6 months में. That is called as inflammatory breast carcinoma. Or it has ulceration. वो set definition है, पढ़ लेना. ठीक है. चलो.
ये हुआ T status. Let's come to N status. N1, N2, N3. For majority most of the cancers तीन ही रहता है N में, N1, N2, N3. ठीक है, N1 ठीक है, ठीक है, N2 नहीं, N1 is axillary, N2 में N2A होता है, ठीक है, N2A, ठीक है, तुम लोग ये थ्योरी है पूरा पढ़ लेना, आई कैन टेल यू, बट अभी कोई याद नहीं रहने वाला है, आई नो फॉर अ फैक्ट, ठीक है. N2A, N2B, N2C एंड N3 एंड मेटास्टेसिस. बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अगर दूसरे ब्रेस्ट में यू आर एग्जामिनिंग वन ब्रेस्ट बट यू कैन सी अ lymphatic metastasis in the axilla of the contralateral side, उसका क्या होगा? How will you define that? नहीं, उसका staging पूछ रहा हूं. Axillary lymph node on the contralateral breast is positive. It is metastatic carcinoma. ठीक है? It is not there, but it is not written वहां पे. But lymph node status is always for the ipsilateral nodes. Contralateral में मिला metastatic. ठीक, चलो. Somebody tell me the treatment. Basic. Supposedly छोटा ट्यूमर है. दो टाइप का होता है ब्रेस्ट ट्रीटमेंट. ये तो सर्जिकल में दो अप्रोचेस होता है, ये तो पता है, राइट? बोलो. ठीक है, ओके. हाँ, सीधा यू विल रिमूव ओवरी एंड यूट्रस ऑल्सो. ठीक है, कब करोगे? नहीं, यू आर राइट. कब करोगे? बोलो. When will you do that? When will you do salpingo oophorectomy? Don't answer like this. मतलब फालतू का बहुत लंबा केस हो जाएगा तुम लोग का. You do that in Krukenberg's. ऐसे मत आंसर करना है ना. बेसिक, जब बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे, बेसिक चीज. You're right, तुम BCS ठीक बोला. ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी क्या करते हो ब्रेस्ट कंजर्वेटिव में? लंपेक्टमी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी. ठीक है, चलो. BCS हुआ एंड एक और MRM, राइट? और कैंसर दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं. एक तुम BCS कर सकते हो या MRM कर सकते हो, राइट? MRM में तीन मॉडिफिकेशन आते हैं, पैटीज, लाहीज एंड ऑकलिन सॉस. हाँ, तीन जन का है. ये है पैटीज, लाहीज एंड ऑचिन क्लॉस, राइट? ये तीन है. तुम लोग ये थ्योरी के लिए पढ़ लेना, प्लस पूछ सकते हैं तुम्हारे वाइवा में. चलो, राइट. अब नाउ यू हैव टू रीड व्हाई BCS एंड व्हाई नॉट MRM, व्हाट आर द डिसएडवांटेज. ये सब थ्योरी के क्वेश्चंस हैं. आई एम टेलिंग यू, रीड अबाउट अ लिटिल बिट एंड नेक्स्ट वीक आई विल बी आस्किंग यू. तो कोई पढ़ के आना, तो नेक्स्ट वीक somebody answer, everybody will get to know. चलो, ओके, ठीक है. then let's come to a little bit of benign conditions. हाँ, कि जाना है, घर जाना है. कितना बज रहा है यार? हाँ, फ्राइडे हो गया क्या? कौन बोला फ्राइडे हो गया? भाई फाइनल ईयर में हो, फ्राइडे सैटरडे कुछ नहीं है तुम लोग के लिए. हाँ, फाइनल ईयर में फ्राइडे सैटरडे कुछ नहीं होता है. अभी पढ़ लोगे तो बाद में संडे मिलेगा, नहीं तो संडे भी नहीं मिलेगा वो बाद में तुम्हारे को. बिनाइन पढ़ना है, बेसिक नहीं पढ़ना है. पढ़ के आओगे, पढ़ना है अभी. ठीक है. फाइब्रोएडिनोमा, बिनाइन ब्रेस्ट कंडीशन में फाइब्रोएडिनोमा रहता है. व्हाट इज इट आल्सो कॉल्ड एज? ब्रेस्ट माउस. व्हाई? हाईली मोबाइल. ठीक है, ठीक. ओके. ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव. हाँ, यस, कंजर्वेटिव कर सकते हो इफ इट इज वेरी स्मॉल. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉमन आंसर यार, एक्सिशन, रिमूवल. ठीक है, ओके, ठीक है. ये हुआ फाइब्रोएडिनोमा हुआ. उसके अलावा फाइलॉइड्स. व्हाट इज फाइलॉइड्स? तो पैथोलॉजी में पढ़े हो यार. थोड़ा एटलीस्ट जोर दो, घुटने में थोड़ा सा जोर दो, देखो याद आएगा. यस, तीन एलिमेंट रहता है. ठीक है, थोड़ा याद आ रहा है तुम्हारे को. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइलॉइड्स? लीफ लाइक याद आ रहा है? पैथोलॉजी में पढ़े होगे, लीफ लाइक ट्यूमर, राइट? हाँ, ठीक है. तो फाइलॉइड्स इज अ रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर. इट स्ट्रेचेस द कैप्सूल ऑफ द ट्यूमर, स्ट्रेचेस द स्किन एंड हेंस इट इज अ पेनफुल कंडीशन and also leads to engorgement of the veins. What is the treatment? क्या करोगे? Phyloid is a big tumor, right? अगर if it is a big tumor, excision करने से are you satisfied? Mastectomy करोगे. Good. Phyloid में you go for mastectomy because it is a big tumor. ठीक है. Fibroadenoma, I am covering just the basics. ठीक है, जो तुम लोगों को काम आएगा. बाकी obviously you have to read the theory. Fibroadenoma, phylloids. अब phylloids में there are three types of elements.
ये है वो है, these things are covered in theory, ठीक है. Let's come to breast abscess. ठीक है, breast abscess या हाँ कब, when do you see breast abscess commonly? Lactation, okay. If you see breast abscess in case of lactating women, where do you think the organism has come from? Infant. Good. Okay. ठीक है. How do you do for treatment for abscess? क्या करोगे? Incision and drainage. Right? Incision and drainage. For any abscess. If they ask you what is the treatment for abscess, it will going to be incision and drainage. ठीक है. Breast abscess. Mastitis, I told you cyclical and non-cyclical mastalgia, I told you. Mastalgia हो गया. Okay. उसके बाद benign हो गया. ठीक है. Fine. Benign conditions में mostly यही तुम लोग से पूछते हैं, fibroadenoma, phylloids, breast abscess, mastitis, mastalgia, cyclical and non-cyclical mastalgia पढ़ लेना. और they can ask you about nipple retraction, slit-like and circumferential. Slit-like and circumferential ये पता है क्या? Slit-like retraction is seen in case of theory questions है. Slit-like मतलब छोटा सा, and circumferential मतलब whole thickness. When do you think whole thickness involve होगा? Basic common answer. What do you think? Cancer में कि benign में? Whole thickness. Whole thickness will be in benign. अब naturally benign नहीं तो malignant होगा. हाँ. तो circumferential is seen in malignant and slit-like is seen in benign conditions. चलो ठीक है. Okay, उसके अलावा ठीक है. बाकी ब्रेस्ट कार्सिनोमा पढ़ लेना थोड़ा बहुत. BCS, what is BCS, different types of modifications of MRM, ये सब पढ़ लेना. and radiotherapy. Anybody knows the regimen for chemotherapy? CMF regimen यूज होता है. ठीक है, commonly CMF regimen यूज होता है.